after 0600 hours on 3rd March 1992, when the depth of Dover with charted depth as 5.4 meters be 10.3 meters. That means when will the depth be 10.3 meters? At a place where the charted depth happens to be 5.4 meters. Okay, so basically the question is, they say there is a particular spot close to Dover where the charted depth is 5.4 meters. Now we want to find out what is the earliest time after 6 o'clock on 3rd March 1992 when the depth at this particular location will be 10.3 meters. So this is the question. Any doubt in the question, beta? सर बेसिकली हमें हाइट ऑफ टाइड दी हुई है ना. That's right, beta. We can calculate what is the height of tide. It will be 10.3 minus 5.4. That is 4.9. That's right. Okay, sir. Okay, let's go. So we repeat the first couple of steps. We go to the geographical index of ATT volume 1, alphabetically arranged, reach Dover, and what do we find? Dover is in caps, capital letters, is in bold, its number is 89. By virtue of being in capitals and bold, Dover is a standard port whose predictions are on page 22. So now we go to page 22 of ATT1 and from page 22, we extract information for 3rd March, which is the date of interest. So here is the predictions for 3rd of March, and these are magnified here for us to use. So this is how the first step is completed. So beta, you can open up your tide tables and you can follow these steps. Go to the geographical index first, look for Dover, get the page number, go to that page and look for 3rd March 1992 times and heights. And your times on 3rd, and we have the heights. 0543 we have a low water 1.1 meters. 1041 we have a high water 6.0 meters. 1800 1.2 low water, 2252 6.3 high water. So let's proceed. So now in this case, we have this interpolation curve for Port of Dover. And if you compare it with what we use for Antwerp, you can see the difference. It's clearly evident. Now, required depth is 10.3 meters as per the question here. Now, the charted depth at that point is 5.4 meters. What shall make up for the difference between the charted depth and the required depth? The differential will have to be made up by the height of tide. So to achieve a depth of 10.3 meters, we shall require a height of tide of 4.9 meters. Okay, so you see beta, in this particular question, now we need a height of tide of 4.9 meters. बिकॉज जब 4.9 मीटर्स की हाइट ऑफ टाइड होगी तभी इस लोकेशन पे डेप्थ 10.3 मीटर्स हो पाएगी. So you see it is different from the first question which we did. So in the first question we were given a particular time and we wanted to find out what is the height of tide at that particular time. Now they have given us a height of tide and we have to find out at what time it is happening. So it is totally opposite to what we did in the first example. So let's go ahead and see how this is done. This is the daily prediction which we extracted a while back for 3rd of March. Now we get going with the plotting. But before we get going with the plotting, we need certain more information like the duration of tide,
range of tide. So since we want this time after 0600 hours, so if you see this daily prediction, obviously the time we are looking at is the time when the required height of tide shall be 4.9 meters between the low water at 543 and high water at 1041. So these two would be the tides of interest. So we have the low water at सर 543. यहाँ पे क्वेश्चन है सर. Height of low water tide is 1.1 meters. Go ahead, beta. सर आपने बोला था कि हमेशा हम हाई वाटर के बाद वाला टाइम लेंगे शायद पिछली क्लास में, तो हम ये 1041 और 1800 के बीच में नहीं लेंगे सर? बेटा हाई वाटर के बाद वाला टाइम लेंगे ऐसा नहीं बोला था, मैंने ये बोला था कि टाइम को हमेशा हाई वाटर के रेफरेंस में लिया जाता है। वो हाई वाटर के पहले भी हो सकता है, वो हाई वाटर के बाद भी हो सकता है। लो वाटर के रेफरेंस से टाइम को नहीं लिया जाता। ओके सर, फिर तो हम ले सकते हैं सर ऊपर वाला भी. राइट। सो यहाँ देखो आप डायग्राम के बीच में यहाँ पे उन्होंने हाई वाटर लिखा हुआ है, तो ये जितने भी इंटरवल हैं +1 +2 +3 -1 -2 -3 ये किस पे डिपेंडेंट है? ये हाई वाटर पे डिपेंडेंट है। इनका लो वाटर से कोई लेना देना नहीं है। यस सर, अंडरस्टूड सर. और फिर वो 0600 है ना सर, तो टाइम तो 0543 से 1041 के बीच में ही आएगा ना ये? नहीं बेटा, हम 0543 की रेफरेंस लेंगे ही नहीं, हम 1041 की रेफरेंस से ही निकालेंगे। आगे आगे आएगा, आप चेक कर लेना। ओके सर। हम जब टाइम निकालेंगे तो 1041 के रेफरेंस में निकालेंगे, या तो 1041 में कुछ ऐड करेंगे या 1041 में कुछ सब्ट्रैक्ट करेंगे, क्योंकि 1041 ही हाई वाटर का टाइम है। हम लोग 543 में कुछ ऐड सब्ट्रैक्ट करने वाले नहीं हैं। ओके सर, गॉट इट सर। मैं तो रेंज के लिए बोल रहा था, टाइड की रेंज निकलना। जो रेंज है बेटा दैट इज डिसाइडेड बाय कि जिस टाइम के लिए आपको चाहिए। अब हमें चाहिए हाइट ऑफ टाइड 4.9 मीटर 6 बजे के बाद। तो आप देखो 543 पे लो वाटर हो रहा है, 1041 पे 6 मीटर का हाई वाटर हो रहा है, तो 4.9 मीटर तो 1041 के पहले आ जाएगा ना। हाँ सर, पहले आ जाएगा। वेरी गुड। सो इसीलिए हमने 543 और 1041 इन दोनों को पिकअप किया है। अब 4.9 1041 के बाद भी आएगा, लेकिन हम उसे नहीं कंसिडर कर रहे हैं क्योंकि क्वेश्चन में उन्होंने हमें अर्लीस्ट टाइम बोला है आफ्टर 6 o'clock। यस सर। क्लियर बेटा, चलें आगे। यस सर। वेरी गुड। We have high water at 1041 with height being 6 meters. Quickly, please get the duration of the tide. I'm sure you'll agree the duration is 4 hours 58 minutes. Likewise, please do get the range of tide. Range of tide is 4.9 meters. So beta, just write down these times and heights from your table. Don't look at the screen and copy it, no use. From your table, you write down the time and height of low water and high water and calculate the duration of tide and also calculate the range of tide. ये दोनों काम आप अपनी नोटबुक में करो अभी and let me know once you are done. ओके सर। Okay. Anybody stuck beta? Everybody got it up to here? Very good beta, great. So we have the duration of tide 4 hour 58 minute. We have the range of tide which is 4.9 meters. अब बेटा यहाँ कंफ्यूज नहीं होना, जो हाइट ऑफ टाइड हमें चाहिए वो भी 4.9 मीटर है, दैट्स ए डिफरेंट थिंग। और जो रेंज ऑफ टाइड आई है वो भी 4.9 मीटर है, दैट इज ए डिफरेंट थिंग। ये दोनों अलग अलग चीजें हैं, फॉर्चुनेटली दोनों मैच कर गई हैं, बट डोंट गेट कंफ्यूज्ड। ओके यस सर, यस सर। राइट।
So let's now proceed ahead. Now, in the previous question, we had the interval because we knew the time and we could start from the baseline and go up and come up to the scale. In this case, we have the height of tide that we would like to have. So in this case, we have a starting point on this scale. So let's draw the interpolation line first. We mark off low water of 1.1 on the lower baseline scale. We mark off high water out here on the upper scale. We join them with a straight line, we get the baseline. So beta, please pick up your diagram now and mark off these low water and high water heights and draw the interpolation line. Let me know once the line is there on your chart. Done, sir. Very good, beta. Anybody stuck up to here? Not able to move ahead? Great. Very good. Now we identify this required height on this scale of 4.9 meters. So this is the required height of 4.9 meters. This is the first step now, beta. Whatever height is required, we identify that height. So हमने ये 4.9 को अपने स्केल में आइडेंटिफाई कर लिया है. We follow the reverse order this time. So from this 4.9, we come vertically down to the interpolation line like this. Now where it hits the interpolation line, from where we go horizontally to this curve. Now when we go horizontally to this curve, we could stop here on the left side of it, or we could go to the right of it. Now you have to see whether your time of occurrence is before high water or after high water. ओके. सो अब बेटा हमें इंटरपोलेशन लाइन पे जहाँ पे भी ये वर्टिकल लाइन ने आके टच किया है, यहाँ से एक हॉरिजॉन्टल लाइन को ड्रॉ करना है. ये हॉरिजॉन्टल लाइन हमारे कर्व को दो जगह पे कट कर सकती है. एक तो यहाँ पे लेफ्ट हाई वाटर के लेफ्ट साइड में, और दूसरा यहाँ पे हाई वाटर के राइट साइड में. सो कैन यू थिंक एंड टेल मी वेयर शुड वी स्टॉप अवर हॉरिजॉन्टल लाइन? लेफ्ट में स्टॉप करें या राइट में स्टॉप करें? कहाँ स्टॉप करें? लेफ्ट में, सर. वेरी गुड. लेफ्ट में स्टॉप करेंगे. एंड व्हाट इज द रीजन बेटा, राइट में क्यों नहीं जाएंगे? क्योंकि हाई वाटर के बाद अर्लीस्ट में तो लेफ्ट में है ना. वेरी गुड बेटा. बिकॉज जो राइट साइड का टाइम आएगा वो हाई वाटर के बाद का टाइम है. हमें अर्लीस्ट टाइम चाहिए. सो हमें हाई वाटर के पहले का टाइम चाहिए. सो हम हाई वाटर के लेफ्ट साइड में ही रुकेंगे जहाँ पे हमारी हॉरिजॉन्टल लाइन ग्राफ को कट करेगी. लेट्स ड्रॉ इट नाउ. Now we can see it's a flood tide. Why? Because 543 was low water. High water is 1041, so it's flood tide. So the height of tide when it is 4.9 meters, that shall be a time before high water. So that means when we go horizontally from here, we'll be stopping on the left side. That means before high water. So we go to the left up to the curve. And what we find is that there is only one curve here. So the question of interpolation, extrapolation does not arise. So we hit the curve. In this case, it is the spring curve here. So we go and hit here. So don't worry about the range now, because whether it's 5.9 spring here and 4.9 for our case, when there is only one curve, you shall come up to the curve that is there. Now from here, you come vertically down onto the base scale, and you read off this interval from here. And the interval happens to be, when you read up from here, it's 1 hour 40 minutes before high water. Okay, so just do this exercise on your plot beta. Let me know once you reach up to 140.
सर मेरा 1 hour 50 minutes आ रहा है. Sir, mine is Okay, coming beta. 1 hour 55 minutes. 155. Yes, sir. Okay. A little bit of error is possible because of the distortions in the photocopy also. How much are you getting, beta? सर ये अप्रोक्सीमेटली 1 hour 40 minutes ही आ रहा है मेरा. Okay, all right. सर मेरा 50 आ रहा है. Okay, beta, that's fine, no problem. पर ये थोड़ा बहुत डिफरेंस आ रहा है, इसके मार्क्स कटेंगे क्या? नहीं बेटा, सम डिफरेंस इज अलाउड बिकॉज ये जो डायग्राम है इसमें विजुअल इंटरपोलेशन भी अलाउड होती है. So little bit of difference here and there should be fine till the time your values interpolation diagram is correct. Means the required height of tide shall be 1 hour 40 minutes before high water, which is at 10:41. The interval is now obtained from the plot, and it's 1 hour 40 minutes before high water. And what is the time of high water? 10:41. So then what shall be the time when we'll have the required height of tide of 4.9 meters? Obviously, that shall be 10:41 minus this interval, and the time happens to be 0901 hours. So at 0901 hours, you can expect that height of tide of Dover, where the charted depth is 5.4 meters, would be 4.9 meters, making the depth of water as 10.3 meters. Okay, so 0901 hours you will have the height of tide. Go ahead beta. आगे पीछे चलेगा 45 मिनट आगे मेरा थोड़ा ज्यादा आया हुआ है. चलेगा बेटा, चलेगा. You got 145. हाँ सर इतना का आ गया. हाँ जी सर. That should be okay, not an issue. ठीक है सर. Because हमारी जो मिनिमम रेजोल्यूशन है इस स्केल पे, द मिनिमम रेजोल्यूशन इज 10 minutes. Okay, so up to about ±5 I don't see any problem at all. अगर इससे ज़्यादा का डिफरेंस आ रहा है, somebody was getting 150 also. So if you are getting difference more than 5, then just check your diagram once carefully. But it is possible because of distortion in the photocopies, you may have difference coming in. So just check your working if the difference is more than 5 minutes plus or minus. Otherwise fine beta. Sir, there is one question, sir. सर बोलो बेटा. One by one, go ahead. सर अगर इसमें स्प्रिंग और नीब का ग्राफ जो होता है वो सेम नहीं होता, जैसे लास्ट क्वेश्चन में अलग अलग था वैसे Right. होता सर, तो हम लोग कैसे करते सर? Very good बेटा. Now let's see हमारी जो height of tide है, just a minute let me. बेटा कि हमारी जो height of tide है, required height of tide, let us say it was 3 meters. So अगर ये 3 मीटर की height of tide हमें चाहिए होती, then we would have started from here. When you come down, you touch the interpolation line at this particular point. And now when you draw a horizontal line, you will see you have a dotted line curve and you have a solid line curve. So where do we stop our horizontal line in this case? So ऐसे केस में बेटा remember जो dotted line है, dotted line in this case represents a neap range 3.3 meters and जो solid line है, solid line represents a range of 5.9 meters. अब हमारी रेंज कितनी आई है बेटा? हमारी रेंज आई है 4.9 meters. So when you go horizontal, the dotted line represents 3.3, solid line represents 5.9. We have to stop at 4.9. So you can do interpolation, visual interpolation will also do, or you can do it by calculator also.
and you stop in between these two lines. Right, beta? Did you understand? Yes, sir. Okay, so wherever you stop in between these two, you drop a vertical line and you can read off the time before high water. Fortunately, in our question, the area where it touched the graph, we had a single line. So whether dotted or solid, both of them, spring or neap, both of them were at the same point. So there was no need of any interpolation. सर Okay. एक बार इसको सर अगर फिर हम से बता देना सर। टाइड अगर 3 मीटर या उससे कम होती तो हाइट ऑफ टाइड अगर 3 मीटर से कम होती, 3.3 से कम होती, राइट? यस सर, तो हम नीप टाइड रहते ना, नीप वाला कर डॉटेड कर। एग्जैक्टली बेटा, जैसा हमने शुरू में देखा था एक्सप्लेनेशन में कि अगर कभी भी आपकी रेंज नीप रेंज से कम हो जाती है, एनीथिंग लेस देन 3.3, यू विल पिक अप द डॉटेड लाइन ओनली। हम लोग डॉटेड लाइन के बाहर नहीं जाते हैं। एंड सेम वे अगर आपकी हाइट जो है वो 5.9 से ज़्यादा हो जाती है, देन यू विल ऑलवेज पिक अप द सॉलिड लाइन। वी डोंट गो आउटसाइड द सॉलिड लाइन। ओके बेटा? ओके, और बताओ बेटा, सर और क्या डाउट्स हैं? बेसिकली सर इसके लिए हम रेंज को देखेंगे, जो टाइड की जो रेंज है दैट्स कितना से राइट कितने बेटा, तक वेरी कर रही है। exactly. We will see the range of tide to interpolate between the dotted and solid lines. Range of tide. ओके सर, और किस केस में सर इन दोनों के बीच में हम लेंगे? I didn't get you बेटा, ask again. सर वो कौन सा केस बनेगा जिसमें सर ये डॉटेड लाइन और सॉलिड लाइन के बीच में हम इंटरपोलेट करेंगे? बेटा जो अभी हमने डिस्कस किया, let us say you are looking for a height of tide of 3 meters. ओके Okay? सर। अब जब 3 मीटर से आप वर्टिकली डाउन आओगे and you go horizontal after the interpolation line, you will see the dotted and solid line are at different locations. So now Yes, we sir. need to interpolate and pick up a point between these two. Okay, is it sorted out beta, your doubt? ओके सर, 3 के लिए आएंगे तो इंटरपोलेट करेंगे। ओके। Not only 3, I just gave you an example. In fact, any range between, let us say, about 4.5 meter height से लेके up to, let us say, almost low water, that is 1.1 meter. So any height of tide between 1.1 and 4.5, you will need to interpolate, because इस height के बीच में आप देखोगे दोनों के दोनों कर्व जो हैं ये अलग अलग हैं. Solid line is different, the dotted line is different. यस सर। ओके, और डाउट बताओ बेटा। तो मिडिल में ले लेंगे सर इनके, नीप के और स्प्रिंग के बेटा दोनों के मिडिल में ले लेंगे अगर इन मिडल केस में ऑफ नहीं इंटरपोलेशन लेंगे, करना पड़ तो। मैं आपको बताता हूँ बेटा। देखो दो चीज़ें हैं, या तो आप इसे विजुअली इंटरपोलेट कर सकते हो। देखो 5.9 और 3.3 में कितना डिफरेंस है बेटा? 2.4 सर। ओके 2.6, हाँ 5.9 2.6 2.6 यस। 2.6 5.9 3.3 में डिफरेंस है 2.6 मीटर्स का। तो आप जहां कहीं भी इंटरपोलेट करना चाहते हो, ये पूरी की पूरी लाइन की जो लेंथ है ये 2.6 मीटर को रिप्रेजेंट कर रही है। डॉटेड लाइन रिप्रेजेंट 3.3, सॉलिड रिप्रेजेंट 5.9। सो जो गैप है दोनों में, इट इज बेसिकली रिप्रेजेंटिंग 2.6 मीटर लेंथ। ओके, अब आपको देखना है कि आपकी जो रेंज है ये है 4.9, हाउ फार अवे इट इज फ्रॉम 3.3? 1.6 मीटर, करेक्ट? यस सर। सो पूरी की पूरी लाइन रिप्रेजेंट कर रही है 2.6 मीटर। आपको कहाँ पे रुकना है? आपको रुकना है 1.6 मीटर की लेंथ पे। सो अप्रोक्सीमेटली यू कैन फाइंड आउट ए पॉइंट इन बिटवीन दीज टू. द पॉइंट विल बी क्लोजर टू द सॉलिड लाइन एंड लिटिल बिट फार फ्रॉम द डॉटेड लाइन. क्लोजर टू सॉलिड लाइन क्यों होगा?
क्योंकि 4.9 इज क्लोजर टू 5.9 एंड अवे फ्रॉम 3.3। ओके, अगर ये 4.6 होता यहाँ पे, हमारी रेंज ऑफ टाइड जो है ये 4.6 मीटर होती, तो एग्जैक्टली इन दोनों के बीच में आती। तो हम सॉलिड और डॉटेड लाइन के बिल्कुल बीच का पॉइंट ले सकते थे अगर ये 4.6 होता, पर अब ये 4.9 है, तो हम बिल्कुल बीच में नहीं जाएंगे, हम थोड़ा सा सॉलिड लाइन की तरफ आगे बढ़ जाएंगे। सो दिस इज नोन एज विजुअल इंटरपोलेशन। विजुअली आपने इसको देखा और इंटरपोलेट कर दिया। आप अगर चाहो तो इसे कैलकुलेटर में मैथमेटिकली भी इंटरपोलेट कर सकते हो। यू वांट मी टू शो यू? इट इज नॉट रिक्वायर्ड दो। अगर आप बोलते हो तो मैं अभी आपको करके दिखाता हूँ। नहीं सर, सर इस टाइप का कोई Yes, क्वेश्चन sir. है हमारे पास में किस टाइप का बेटा? सर एक बार बता सर, दीजिए। जिसमें इंटरपोलेट करना पड़ेगा? ओके बेटा, नहीं, आई डाउट। और एक सॉलिड लाइन है, इट इज समथिंग लाइक दिस, और लेट अस से हमारी जो हॉरिजॉन्टल लाइन है वो ऐसे आ रही है। अब हमें ये पता करना है कि हम कहाँ पे रुकें। ओके, सो वेयर डू वी स्टॉप? अब बेटा सबसे पहली बात तो ये कि ये जो पूरी की पूरी लाइन है, इट इज़ रिप्रेजेंटिंग ए रेंज ऑफ 2.6 मीटर्स। 2.6 मीटर को रिप्रेजेंट कर रही है ये। ओके, सो अगर आप इसे कैलकुलेटर से निकालना चाहते हो, जिसकी ज़रूरत नहीं है, आई एम जस्ट टेलिंग यू फॉर इंटरेस्ट, आप क्या करो, लेट अस कॉल दिस पॉइंट एज ए एंड लेट अस कॉल दिस पॉइंट एज बी। आप अपने स्केल से ये ए और बी के बीच में कितना गैप है इसे मेजर कर लो। ओके, कैन यू टेल मी बेटा, किसी की भी डायग्राम में लेट अस टेक ए हाइट ऑफ 3 मीटर्स, 3 मीटर पे वर्टिकली नीचे आ जाओ और मुझे बताओ कि सॉलिड लाइन और डॉटेड लाइन में कितना गैप आ रहा है हॉरिजॉन्टली। It will सर be in अबाउट 4 millimeters. mm सर। वेरी गुड, सो 4 इट इज mm सर। मिलीमीटर्स। सो हमने इसे यहाँ पे लिख लिया, इट इज 4 मिलीमीटर्स। सो अब बेटा 2.6 मीटर की जो रेंज है, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय 4 मिलीमीटर्स। ओके, हमें जो रेंज चाहिए वो 4.9 की रेंज चाहिए। नाउ हाउ फार अवे 4.9 इज फ्रॉम 3.3? सो 4.9 मीटर की जो रेंज हमें चाहिए वो 3.3 मीटर से कितनी दूर है? 1.6। 1.6 मीटर। सो अब देखो बेटा, 2.6 मीटर की जो रेंज थी, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय 4 मिलीमीटर्स। अगर 1 मीटर की रेंज होती, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय 4 डिवाइडेड बाय 2.6, और हमें जो रेंज चाहिए वो चाहिए 1.6 मीटर्स की रेंज, तो हमने इसे मल्टीप्लाई कर दिया 1.6 के साथ। नाउ यू डू दिस इन कैलकुलेटर, 4 divided by 2.6 multiplied by 1.6 and tell me what is the answer. सर 2.46। वेरी गुड, राउंड ऑफ कर दें तो 2.5 हो जाता है ये। 2.5 मिलीमीटर हमने कवर करना है। तो अब हमने क्या करना है, जब आप ये हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करोगे, डॉटेड लाइन से 2.5 मिलीमीटर आगे जाओगे, वहाँ पे आप मार्क लगा दोगे, दैट इज़ द पॉइंट जहाँ से आपको वर्टिकली नीचे आना है। This is how you can interpolate it using the calculator also. अब बेटा अगर ये ना समझ में आया हो तो इसको छोड़ देना, इससे कंफ्यूज मत होना, बिकॉज दिस इज नॉट मैंडेटरली रिक्वायर्ड। आप विजुअली भी इंटरपोलेट कर सकते हो। अगर ये समझ में आ गया है तो बहुत बढ़िया।